Welcome back to your lecture continuation with the topic complex integration. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपको मैंने बताया था कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के बारे में बताया था, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन एफजेड है, ये एनालिटिक है, कोई भी फंक्शन एफजेड एनालिटिक है इन रीजन आर, and f dash z is continuous at all the points inside and on C, then integral C f z dz is equal to 0. ये हमारे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का था स्टेटमेंट कि अगर कोई भी फंक्शन एफजेड किसी रीजन आर में एनालिटिक हो और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन सी, and this C is a simple closed contour where C is simple closed contour lies in the region R. तो हमारे पास ये हमने इसके स्टेटमेंट के साथ में इसके प्रूफ भी बताए थे और इसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि किस तरह से हम एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंस टू कॉन्सिक्वेंसेस, इनके कॉन्सिक्वेंसेस दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस प्राप्त होते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस जो अभी मैं जा रहा हूं आपको बताने, पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर कोई भी फंक्शन एफजेड लिया जाए, द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज इफ एफजेड इज एनालिटिक इन द रीजन R and P, Q are any two points in the region R, then integral P to Q f of dz is independent of path joining the points P and Q lies in the region R. इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम फंक्शन को किसी रीजन में एनालिटिक ले लें और उसी रीजन के किसी भी दो पॉइंट P और Q को ले लें और इस P और Q को चाहे जिस तरह से भी ज्वाइन करें, चाहे आर्क के द्वारा या स्ट्रेट लाइन के द्वारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपका जिसके द्वारा लेंगे सबकी वैल्यू सेम आएगी। यानी कि P to Q fz dz is independent of the path joining the points P and Q lies in the region R. इसका ये तात्पर्य है, मान लीजिए ये y एक्सिस है, इट इज y एक्सिस and it is x axis. I am taking this region R. Here is the region R. ये region R है। इसमें हम मान लेते हैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर P लिया, यहाँ पर पॉइंट Q लिया। इस रीजन R में हमने दो कोई पॉइंट लिया। इस पॉइंट P से Q को ज्वाइन करने का तरीका एक ऐसे हम ज्वाइन कर लिए आर्क से, सपोज P M Q से ज्वाइन किया। दूसरी तरह से हम ज्वाइन कर लिए ऐसे, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया ऐसे, ये नाम दे दिया जाए इसका P N Q। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ
कि चाहे इस P से Q को चाहे इस PMQ से ज्वाइन करिए, चाहे PNQ से ज्वाइन करिए, इंटीग्रेशन अगर उसकी इसके अलोंग लेंगे या इसके अलोंग लेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा। ये इसीलिए कहा जाता है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q, meaning thereby whenever you are given any 2 point in a region where the function abject is analytic, then integration P to Q does not depend on the path joining the points P and Q. Let us prove it, how it is possible. Proof of these consequences. Let us join the point PQ, P and Q, we can say P and Q by the path and arc PMQ, and we join P and Q in other way by the path and arc P and Q. Then we see that PMQNP is a simple closed contour in the region R. Then we see that P, M, Q and P, and here is P, here is M, Q and P. This becomes a closed contour. जब ये क्लोज कंटूर हो गया और आपको पता है कि इस रीजन R के अंदर ये क्लोज कंटूर फॉर्म हुआ और आपको ये दिया गया है कि एब्जेक्ट इज एनालिटिक इन द रीजन R, इसका ये मतलब होता है कि दिस फंक्शन एब्जेक्ट विल बी एनालिटिक एट all the point lies inside the contour P, M, Q and P, and on the boundary of these closed contour P, M, Q and P. Therefore, since a object is analytic in the region R, so object will be analytic inside and on simple closed contour P, M, Q and P. Hence, by Cauchy's theorem, integral theorem, integration P, M, Q and P f of z dz is equal to 0. Hence, by Cauchy integral theorem, because P, M, Q and P is forming a simple closed contour and fz being analytic inside and on a simple closed contour P, M, Q and P. So by Cauchy's theorem, integration of fz dz along this closed contour, it becomes 0. This is the Cauchy's theorem. Now we can write this region integration P, M, Q and P f of z dz at the sum of 2. Here is P, M, Q f of z dz plus integration Q n P f of z dz, because these two is and this is equal to 0.
because these two combine together to form a simple closed contour PMQNP. Now we can say this implies integral PMQ f of z dz, but this direction P and Q is reverse direction of Q and P. So this becomes minus times P and Q f of z dz, and this is equal to 0. And this shows integral P m Q f of z dz is equal to integral P and Q f of z dz. Hence this shows that integration P to Q f of z dz does not depend on the path joining the points P and Q, and this completes the proof. Pause कर दो. Second consequences में ये लिखा है, if fz is analytic in the region R between two simple closed contour C1 and C2, where C2 lies completely inside C1, then integration of fz along C1 dz is equal to integration of fz along C2 dz. Now we shall show this with the help of Cauchy's integral theorem. When there are two contours, simple closed contours C1 and C2, being such a way that C2 lies completely inside C1, I have taken here is a C1 contour. Direction is taken anti-clockwise direction. We can say where C1 and C2 have described in anti-clockwise direction. Let us join the initial point from where the C1 is going to construct A to B, the C2. Then we see that let C being a simple closed contour formed between two contours C1 and C2, and fz is analytic inside and on the simple closed contour C. Thus by Cauchy's theorem, we can say integral along C f of z dz becomes 0. Let us join B to A. Let us join A to B and B to A. Then integral C f of z can be written as integral C1 f of z dz plus integral C1 from here to here. Now A to B, integration A to B f of z dz plus from here to here integration C2 plus integral C2 f z dz
plus here to here integral b to a e of z dz, and this is given to be 0. Since integral a to b e of z dz cancelled out by integral b to a e of z dz, because integral b to a e of z dz is equal to minus times a to b e of z dz. Hence, from above we find integral c1 e of z dz is equal to integral c2 e of z dz, hence proved. So these are the useful consequences of Cauchy's integral theorem. With the help of these consequences, we can derive some more results which are very important. Just after these consequences, we shall discuss another theorem known as Cauchy's integral formula. Cauchy integral formula, and this Cauchy integral formula will be discussed in the video in the next video, we can say. Thank you.